Hello guys, welcome to our institute. And today is the holiday, so we just did a extra class for our student. So you can see a lot of student today attended and they practiced a lot of practical. Normally during the class days they won't get much time for the practical, right? So today we conducted an extra practical classes. So today I hope they experience a lot, they practice a lot. So this is a small feedback video. So let's check with our student what they're saying about the institute. Okay, so I have told them that they should provide a honest review. All right, so no need to make me happy. So what they experience here, what they're learning, just explain that much only. Okay, so let's begin with this Mr. Nagarajan. So hi brother, can you just explain how long you came to this institute? Yeah, I am Nagarajan. Last 2 months attend the class here. Here the class is very easily can understand because of sir is very close to our teaching method. It's very nice and practical how to do. I don't know the electronics item, but after I came here, then I will understand what is the electronics things and phone, how to repair. I don't know the basic knowledge also. Then after I came here, then I will slowly understand. Now I can 50% also now improving. Then I didn't finish the class, so we have more classes. Then I will learn to very easily. I can learn. I have confidence because of our teaching methods very nice. That's why I came here. Then today also I am purposely doing very well for reballing, how to do reballing. Previously I didn't do, but today I do practical very well because of sir is very confidently teach me. That's why I do today. I satisfied with the class. So today you tried IC reballing, right? Yes. So one attempt you completely successfully done. First one, the removing time I will little slowly. Then after reballing, then I can put confidently. One time I attend. Okay, good. Anything you want to tell for our Tamil friends? So in Tamil, you can. யாரும் மொபைல் ரிப்பேரிங் பண்ணணும் கோர்ஸ் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ஜாயின் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியான இங்கிலீஷ்லேயும் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு நாளைக்கு தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட சார் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, எல்லாமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள். பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அவங்க யாராருக்கு தோணுதோ கண்டிப்பாக செய்யுங்க. தேங்க்ஸ் சார். Okay, thank you. Okay, let's move to this side. So, okay, Mahbub bhai, he's just, this is I think third class. Yes. So just explain how, means you very short time you came here. So tell me how was your journey, how is the learning process, and what you thinking you can learn here. Is this institute benefit for you or not? Firstly, I said that our teacher is very friendly. So whatever we don't know, he explained clearly. Then he teaches like a clean water only. We can see whatever small things he teaches are closely coming. Then clearly he can teach us. Then here have some materials are all sufficient. Equipment also have, you can see all expensive equipment also here. Then anytime you can come and practice, especially on Sunday, that time you can come in. Then any public holiday also class available. So within 3 days many things learned. Now I can rebuilding all IC, can open any mobile and can all cool test and hot test also can perform. So anything we don't know sir clearly we teach us, then we also can clearly rectify the issue. So for those who want to learn on mobile industry, he without any delay can come here and can gather their important knowledge about this job.
So for Bangladeshi people who want to learn, for Bangladeshi people I can say that দেশি ভাইরা আপনারা যদি বাংলাদেশে কোনো একটা কিছু কইরা খাইতে চান তাহলে অবশ্যই, যদি সিঙ্গাপুরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাজ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে আইসা পড়ে, নিঃসন্দেহে স্যারে বাংলায়ও কথা বলতে পারে, সব কিছু সুন্দরভাবে আপনাদেরকে বুঝাই দিব। সো যারা লং টাইম সিঙ্গাপুর করতে না চান, যারা সিঙ্গাপুরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এখানে কাজটা শিক্ষা নিজের স্কিল দক্ষতা বাড়ায়া বাংলাদেশে গিয়েও কিন্তু আপনি কিছু কইরা খাইতে পারবেন। বর্তমানে বাংলাদেশেও এই কাজটার অনেক মূল্য। সো আপনারা, আশা করি আপনারা যারা রবিবারে বন্ধ আছে অথবা রবিবার বন্ধ যদি নাও থাকে, আপনারা 7টার পরে যদি ফ্রি থাকেন, এখানে এসে এই যে রেডি এমআরটির কাছেই, এমআরটি থেকে 5টা স্টপেজ পরেই এখানে এসে আপনারা খুব সহজেই কাজটা শিখে নিতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি যারা মনে করেন যে বাংলাদেশে গিয়া শিখবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের বাংলাদেশে গেলেন, কাজ শিখতেছেন, কিন্তু আপনার কোনো ইনকাম আইতেছে না। আর এই জায়গায় আপনি বেতনও পাইতেছেন, আবার প্রত্যেক মাসের রবিবারে আইসা অথবা যদি রবিবারে কাজ থাকে তাহলে প্রত্যেক দিনও আপনারা 7টার পরে আইসা এখানে কাজ শিখতে পারেন। মনে করেন যখন আপনার কাজ শিখা শেষ, তারপরও মাঝে মাঝে আপনার বন্ধু বান্ধবের মোবাইল নষ্ট হয়ে গেলে আপনি নিয়ে আসতে পারেন, স্যারের হেল্প নিয়ে, অথবা আপনি নিজেও প্র্যাকটিস করতে পারেন। এভাবে আপনার স্কিল আরও বাড়বে। সো সময়কে অপচয় না করে আমি মনে করি হাতের কাজটা শিক্ষালন, তাইলে বাংলাদেশে গিয়া কিছু কইরা খাইতে পারবেন। আশা করি আপনারা এই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে আরও যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অনলাইনে স্যারের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, নিজস্ব সব কিছু আছে। এখানে আপনারা শুধু এখানে শিখবেন তা না, আপনারা ভিডিও দেখতে পারবেন। এখানে স্যারে অনলাইনে ভিডিও আপলোড করে, স্যারের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম আছে, ওই জায়গায় ভিডিওর মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ বেসিক টু অ্যাডভান্স পর্যন্ত আপনার যা জানা দরকার সব কিছু আপনি কিন্তু ওই ভিডিওর মাধ্যমেও দেখতে পারবেন। ইচ্ছা হয় তাহলে স্যারের ওয়েবসাইটে যান, গিয়ে ওয়েবসাইটে লগ ইন করে পরে দেখেন যে ভিডিওগুলো কিভাবে বেসিক লেভেল থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ বুঝাই দিছে। স্যারে খুব সহজেই সুন্দরভাবে, কোনো তাড়াহুড়া না, সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে আমি ভিডিওগুলো কিন্তু আমি যখন দেখছি তখন অনেক কিছু শিখতে পারছি এই ভিডিও থেকে। আশা করি আপনারাও শিখতে পারবেন। কাজেই বন্ধুরা, চলে আসেন এই ইনস্টিটিউটে নিঃসন্দেহে। Thank you. Okay, so thank you very much, Mahbub bhai, for your feedback. Okay, so we have another our Desi brother. So his name is Mr. Nasir. So he also quite long. He's coming to our institute. So what is your feedback, Mr. Nasir? আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম নাসির। আমি সিঙ্গাপুরে কাজ করি প্রায় অনেক বছর হবে, কিন্তু আমি মোবাইলে কাজ শেখার অনেক ইচ্ছা ছিল, দেশে ইচ্ছা ছিল, পারি নাই সময়ের কারণে। এখন সিঙ্গাপুরে আমি অনলাইনের মাধ্যমে স্যারের ইউটিউব চ্যানেল আছে, এখানে স্যারের কাজ শেখার ল্যাবের আর কি ইনস্টিটিউট পেয়েছি। তারপর আমি এখানে আর কি স্যারের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করেছি। তারপর এখানে প্রায় আমি 2 মাস হবে আর কি কাজ শিখতেছি। এখানে খুব সুন্দরভাবে আর কি স্যারের কাজ শেখায়। স্যারও খুব ভালো মানুষ, বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। কাজ যদি একবার না পারি, যতবার জিজ্ঞাসা করবো স্যার অতবারই শেখায়। তাই আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন মোটামুটি আইসি লিভিং আজকে ফার্স্ট টাইম করলাম। আমি 3বার করেছি, একবারও হয়নি। পরে লাস্ট মিনিংয়ে ইনশাল্লাহ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। তাহলে আর কি এখন তারপরে পাওয়ার আইসি, তারপরে ইএমএমসি, তারপরে চার্জিং পোর্টের, এগুলি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো করে এখন পারি। ড্রয়িংও বুঝি। তারপরে আমি আগে কিছুই বুঝতাম না মোবাইল সম্বন্ধে, নেগেটিভ পজিটিভ কিছুই জানতাম না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি অনেক মোটামুটি মোবাইলের কম্পিউটার সম্বন্ধে মোটামুটি মাপ টাপ সবই বুঝি আর কি। তারপরে আবার আমাদের যে মিটার আছে, মিটারের ভিতরে অনেকগুলি সেটিং আছে, এগুলি কিছুই জানতাম না। এখন মোটামুটি খুব ভালো পারি। তবে আপনার যদি কেউ কাজ শেখার ইচ্ছা থাকে, আপনি এই জায়গায় কাজ শিখেন বা না শিখেন, যদি ইচ্ছা থাকে আপনি এই জায়গায় আসেন, একদিন দেখেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলেন, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আপনার জায়গায় কাজ শেখার আগ্রহ হবে। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। Thank you. Okay, so that is all about the feedback about our friend Nasir. And here is another our student, Mr. Surya. So he actually he has taken before some training in India. So he want to upgrade his knowledge. That's why he came to our institute. So he's coming to our institute quite long already. So it has been like
2-3 months he's coming. So let's get his feedback. Okay, Mr. Surya, you just tell how long you are coming here. Then before come, what is your experience level? And after you join, what is your the skill level now? Hello everyone, I am Surya. I am studying well for before 3 months, I think. Before 3 months. அந்த டைமில் வந்து எனக்கு பெருசாக நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால். சரி சொல்லி தருவாரோ அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரியல. பட் இப்போ ஓகே, ஐ கான்ஃபிடென்ட். ஹீ மோர் டெல் மீ நிறைய நாலேஜ் எனக்கு வந்து கெயின் பண்ணியிருக்காரு. பிஃபோர் வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் இப்போ ஓகே எனக்கு நல்லா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறையா திங்ஸ்லாம் அவங்க வந்து சஜஷன் பண்ணுறாங்க. லைக் இப்போ நம்ம தேவைப்பட்டதுன்னா அவங்கள்ட்டே வாங்கிக்கிற மாதிரி நம்ம டூல்ஸு அண்டு டிசி அண்டு மைக்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஆல்சோ ஹை லெவல் எல்லாமே நமக்கு தேவையானது எல்லாமே டிவியில் கொடுவோம். வேணும்னா நம்ம மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா மோரோவர் வேறு ஒரு இன்ஸ்டியூட், அதாவது ஒரு தமிழில் உங்களுக்கு கற்றுக்கணும், இல்லை தமிழில் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கற்றுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. மோரோவர் இங்கே வந்து அவங்க இங்கிலீஷில் பேசினாலுமே நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இங்கிலீஷ்லாம் நமக்கு நாலேஜ் இருக்கும். அதனால் தமிழில் இருக்கிறவங்க கூட மோஸ்ட்டாக இங்கே வந்து கற்றுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பேசிக் அதாவது லாங்குவேஜை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல. லாங்குவேஜ் நோ ப்ராப்ளம். அவர் எல்லாமே நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லி தருவாங்க. மொரோவர் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட மேபி தமிழாக கூட இருக்கலாம், அவங்கள்ட்ட கூட நீங்கள் டவுட் கேட்டுக்கலாம், அவங்க கூட சொல்லி தருவாங்க நமக்கு. அவ்வளோதான். லெட்ஸ் ஃபினிஷ். Okay, thank you. Thank you, Surya, for your honest feedback. Then we have another friend, Mr. Tanis. So he is also very new to mobile repairing industry. He is an Malaysian, so he is working in Singapore. So it's quite long. He has been joined with us. He joined our institute, then he is learning. So before he joined, he was zero. So Mr. Tanis, just explain how was your journey with us? How is your skill level now? So just tell few words. Yeah, thank you. I came for learning mobile repairing here. Here the teaching also very easy to catch up, and here got enough facilities to learn. For Malaysia, siapa mau datang sini mau belajar boleh datang. Yang part time pun boleh datang sini belajar. So how is your skill level? Before you came here, you were like zero, right? Yeah. So now, what are the things you can do? Okay. Now I can open my phone and do screen replacement and soldering and motherboard repair, and also How to deal with customer everything. Okay, so he actually learned a lot. He knows all the basic level like changing charging port, battery, display, all this. Beside that, he also know the motherboard level. He knows the soldering, how to change the IC, all this. So he's still learning. So what you are expecting in future? In future, I plan to become a technician and phone repairing technician. Hopefully I learn everything and I do my best. So Okay, thank you very much. So that's all, a short feedback video. So this brother actually he is new today, so he just came to see the facility, all this. So they are friends together. So he haven't joined yet. So I have asked all my students to give the honest feedback. So I didn't ask them to add in anything. So you can watch this video if you think you want to learn mobile phone repairing. Then you are welcome to come and join our institute. So that's all for this video. I will see you in the next video. Thank you.